You have physical pharmaceutics in your syllabus or physical pharmacy. Out of that, what are the important topics in the physical pharmacy for your GPAT Niper DI Pharmacist? So first, your micromeritics is important, phase rule is important, then your rheology is very important, then colloids are important, surface tension interfacial phenomena are important, then after that chemical kinetics are important, after that you have colligative properties. So that these are the list of chapters which are important from physical pharmacy, and you should understand they used to ask at least five questions, 5 to 6 questions from your physical pharmacy. So it is very important in the pharmaceutics department. Okay, so out of that, today we will try to finish, or today we will try to finish at least 50% of this micromeritics. Okay, first of all, what do you mean by micromeritics? Micromeritics is nothing but the micro means what? Micro term will indicate you something about the size. Okay, micro means in a micron, so size in a micron. So what do you mean by micromeritics? Study of particles in the size of micron, known as a micromeritics. Study of particles, particle size, particle shape, particle size distribution, particle volume, density, porosity, etc., etc. Study of these things, study of particle size distribution, okay, particle volume, particle surface area, particle, then density, porosity. Why we need these things? Because while formulating something, if you want to if you want to formulate a tablet, so you have to take into consideration particle size, because particle size and surface area, they are the inversely proportional. So if there is a decrease in the particle size, surface area of that powder will increase. And you know that surface area and particle size, these both things affect the absorption of drug. Okay, so that's why you should have to understand this micromeritics, because ultimately that is going to affect your dosage form, that is going to affect your kinetic process, that is going to affect your kinetic process as well as pharmacological action of drug. So for example, griseopulvin. So if you have not done size reduction for the griseopulvin antibiotic, so you will not have bioavailability, because micronization of griseopulvin particles, it will increase the absorption and ultimately the effect. Okay? That's why micrometrics is nothing but the study of particles in the micron size, study of particle in the micron size, characterization of particle, then particle size, then particle size distribution, and particle size distribution of powder. In this chapter, we are going to discuss these things. What things? Particle size, particle shape, particle volume, density, surface area, porosity, flow, and associated properties related to particles. Remember, okay? Now, next we'll see size of particle may be expressed in a different terms. So, size of particles may be described in the micron, or it may be described in the millimeter, it may be described in the meter, it can be described in a micrometer, or it can be described in the nanometer. Now, particle size can be described or can be measured in case of in the different units. It can be measured in the microns. Particle size can be measured or described in the microns. So what is meant by micron? So 1 micron is equal to 10 raised to minus 3 millimeter mm. 10 raised to 3 mm. 1 micron is equal to 10 raised to 3 mm. 1 micron is equal to 10 raised to 6 meter. 10 raised to 6 meter. 1 micron is equal to 10 raised to minus 3 millimeter mm, and minus 1 micron is equal to 10 raised to minus 3 millimeter. 1 micron is equal to 10 raised to minus 6 meter, and again 1 micron is equal to 10 1 micron is equal to 10 raised to 9 nanometer. 1 micron is equal to 10 raised to 9 nanometer, or 1 micron is equal to 10 raised to 6 okay, millimeter, or 10 raised to 3 millimicrometer. 1 micron is equal to 10 raised to minus 3 millimeter. 1 micron is equal to 10 raised to minus 6 micrometer, or 10 raised to 6 meter, or also called as a millimicrometer. 10 raised to 6 meters or millimicroliter, so micrometer, or 10 raised to 9 means nanometer. So 1 micron is equal to 10 raised to 9 nanometer, 10 raised to 6 meter,
and 10 raised to minus 3 millimeter. So you have to remember क्योंकि इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आता है 1 micron is equal to minus 10 raised to minus 3 millimeter. 1 micron is equal to 10 raised to minus 6 meter. 1 micron is equal to 10 raised to minus 9 nanometer. Okay, so you have to keep in mind. Okay, particle size can be described in the different unit. Micromeritics is nothing but the study of particle size or study of particles in the micron size. Study of particles in the micron size. Now why? Because particle size will affect the different parameters. Particle size will affect the release and dissolution of, okay, release and dissolution. Particle size is inversely proportional to the dissolution. Particle size is inversely proportional to the dissolution. पार्टिकल साइज ज्यादा है तो डिसोल्यूशन क्या होगा, कम होगा. सो इफ पार्टिकल साइज इज हायर देयर विल बी लेस डिसोल्यूशन. इफ पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देयर विल बी मोर डिसोल्यूशन, राइट. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसोल्यूशन एंड सरफेस एरिया. जैसे जिसका पार्टिकल साइज कम होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा. एज पार्टिकल साइज इज लेस सरफेस एरिया इज मोर. इफ पार्टिकल साइज इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, लाइक दैट. सो पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन यहाँ पे रिजोल्यूशन हो गया और वो डिसोल्यूशन, ठीक है. नाउ एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग, अगेन पार्टिकल साइज आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग. पार्टिकल साइज का उसका में एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग में भी रोल होता है. क्या ये डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज मतलब हायर डिसोल्यूशन, एंड हायर डिसोल्यूशन मतलब क्या, हायर बायो अवेलेबिलिटी, है ना. तो अगर पार्टिकल साइज कम होगा तो डिसोल्यूशन ज्यादा होगा, डिसोल्यूशन ज्यादा होगा तो एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा और बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगा. Particle size also affect the absorption of drug and drug action. Physical stability. Again, particle size is very important parameter for stability. Okay, it has been observed that if particle size is less or if particle size is small, it will have a better stability, physical stability. In case of dispersion due to Brownian motion. If particle size is large, so it offers a less stability. तो बेटर स्टेबिलिटी के लिए पार्टिकल साइज स्मॉल होना चाहिए, रिलीज एंड डिसोल्यूशन के लिए स्मॉल होना चाहिए, एब्सॉर्प्शन के लिए भी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है. नाउ अगेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट. इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट इन केस ऑफ पोटेंट ड्रग, जैसे पोटेंट ड्रग है, जैसे मान लीजिए 2 मिलीग्राम अगर किसी डोज है किसी ड्रग का, तो उसका टैबलेट बनाने के लिए बहुत सारा मशक्कत करना पड़ता है, एंड इट इज वेरी टेडियस प्रोसेस टू एस्टेब्लिश द डोसेज यूनिफॉर्मिटी. If you want to establish the dosage uniformity, you should have a uniform particle size. Uniform in the particle size distribution that ultimately gives uniformity in the dosage. Okay, so dosage uniformity. That's why we are studying this micrometrics. Why we are studying particle size affect the release and dissolution, affect the absorption and drug action, affect the physical stability, uniformity of content. A particle size or particle size diameter. Particle size, then particle size distribution, and then particle diameter. Remember, particle size distribution, particle diameter. They are known as the fundamental properties of the particle. इसको बोलते हैं fundamental properties of particle. कभी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. Remember, particle size distribution, particle size distribution, then particle diameter. They are known as the fundamental properties of powder or particle. Based upon these two properties, particle size and diameter, particle size distribution and diameter, various derived properties of powder that has been obtained. Whereas what are the derived properties of powder? So they are nothing but the volume, density, porosity. These are the derived properties of powder. Volume, density, porosity, they are the derived properties of powder. Derived property मतलब क्या कि जो पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर पार्टिकल का डायमीटर है, उसके बेसिस के ऊपर अपने बाकी प्रॉपर्टीज डिफाइन किए. कौन से? कि वॉल्यूम कितना है पार्टिकल का, डेंसिटी क्या है उस पाउडर का पार्टिकल, पोरोसिटी कितना है, वो उसके बेसिस के ऊपर है. किसके? पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है, पोरोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, राइट. पार्टिकल साइज है ना, डायमीटर मतलब शेप ही होता है वो. Derived properties, they are based upon the fundamental properties of powder. And what are the fundamental properties of powder? Particle size distribution, and diameter. You have to remember question इसके ऊपर आ चुके. What are the derived properties of powder? Okay. Remember density, porosity, volume. They are known as the derived properties. Now a lot of people they used to get confused in the volume.
उनको लगता है कि वॉल्यूम भी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, लेकिन फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। Characteristics of powder. Powder की characteristic. Powder can be defined. Powder can be established or characterized by different properties. So characteristic of particles. So what is the particle can be or powder can be expressed in terms of what? In terms of size. Okay, size, shape, volume, surface area, density, porosity, and flow associated properties. Flow associated properties कौन से होते हैं? जैसे angle of repose, Carr's consolidation index, then Hausner's ratio. So they are nothing but the flow associated properties. Size, shape, volume, surface area, density, porosity. Okay. These are the okay, particle can be characterized in terms of size, in terms of shape. In terms of size मतलब क्या कि ये large size particle, small size particle, uniform size particle, spherical particle, shape के according क्या spherical particle, irregular particle और asymmetric particle. Shape symmetric particle को अपन बोलते हैं spherical particle. Surface area, particle having larger surface area, particle having smaller surface area. Density, एक particle having more density, bulk density, उसमें भी type होता है bulk density, true density, tap density, porosity. Well, these are the characters which can define the particle. So particles can be characterized by these things: size, shape, volume, surface area, density, porosity, and associated properties. Now particles, it may be either spherical particle or it may be other asymmetric particle. जो पार्टिकल होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं. मोस्टली फार्मास्यूटिकल पाउडर्स और फार्मास्यूटिकल पाउडर्स दे आर नथिंग बट द they are having particles which are having irregular shape. जो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं उनमें जो है ना पार्टिकल का शेप इरेगुलर होता है. एंड देयर आर टू टाइप ऑफ पाउडर. फर्स्ट वन इज नोन एज अ मोनोसाइज पाउडर. मोनोसाइज पाउडर. सेकंड वन इज नोन एज अ पॉलीसाइज पाउडर. सो व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसाइज पाउडर? है ना, दो टाइप होते हैं इसमें. मोनोसाइज पाउडर. मोनोसाइज पाउडर मीन्स पाउडर हैविंग यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज. if a powder has a uniform particle size, जैसे 1 ग्राम पाउडर ले लो, उसमें के पार्टिकल जो है 1 ग्राम पाउडर में, तो जितने भी पार्टिकल है उसका उसका साइज अगर यूनिफॉर्म है तो उसको बोलेंगे अपन मोनोसाइज पाउडर. इफ ए पाउडर इज हैविंग यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज नोन एज अ मोनोसाइज. इफ पाउडर इज हैविंग non-uniform particle size, it is known as a polysize powder. Known as a polysize powder. There are two type of powder in the pharmaceuticals, but pharmaceutical powders are mostly polysize. But pharmaceutical powder जो होता है mostly polysize होता है. They are not monosize. Now particle shape, okay, particle shape may be expressed as a in a comparison with the sphere. जो particle का shape रहता है, some particles are the for example, geometric shape of your particles. Some particles are the spherical in nature, spherical, or some particles are the spherical, but they are having rough surface. Some particles are the spherical and also having smooth surface. Some particles are the spherical but irregular surface, right? Some particles are the rounded, some particles like angular, elongated, irregular particle, or some particles are the acicular, okay, angular, dendritic. So depending upon the different shapes, these are the different shapes of particle, which are known as geometrical shapes of particle. If particle is having uniform shape, if it is having spherical shape, so you can easily characterize that. है ना, अगर particle uniform का है, sphere के जैसा है, तो आप उसको characterize कर सकते हो. If particle is non-uniform in size, non-uniform in the shape, so it is not easy to characterize. So that's why irregular particles, they can be described in terms of or in comparison with the sphere. Now what is sphere? The sphere means you will have surface area. What is the surface area of sphere? The surface area of sphere is nothing but the pi d s. That is the surface area of volume of sphere. क्या होगा? Volume of sphere means 1 by 6 1 1 divided by 6 pi d cube. एक है ना, एक सर्कल का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, सर्कल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी रेस टू 2, पाई डी स्क्वायर. पाई का वैल्यू होता है 3.14. डी डायमीटर ऑफ द वॉल्यूम कितना होता है? 1 by 6 और 1 divided by 6 into pi d cube. So it is a sphere. It is a sphere as a uniform, है ना,
यूनिफॉर्म डायमीटर, यूनिफॉर्म रेडियस। तो अगर स्फीयर है तो उसका यहाँ से जो रेडियस है उतना ही सभी तरफ है। सो राइट, सो स्फीयर हैज अ सर्कुलर, स्फीयर हैज अ यूनिफॉर्म शेप and size. Okay, surface area of sphere is a pi d square and volume of that sphere is nothing but the 1 by 6 pi d cube. Now for particle to be measured surface area, the particles of non-uniform size, so for example round particle or irregular particle, now they can be described in comparison with the sphere. So particle surface area of asymmetric particle, it can be a asymmetric particle surface area into d square. Volume can be described in terms of sphere. Volume of asymmetric particle is equal to asymmetric particle into d raised to q, d raised to 3. By arranging this equation you will get a some, so जैसे एक shape factor होता है, there is one factor known as shape factor. By arranging this equation you will get a shape factor of particle, which will be surface area of particle divided by volume of particle. Surface area of particle divided by volume of particle. For a sphere you will get a 6. What is the shape factor of sphere? It is a 6. How it is obtained? Shape factor कैसे मिलता है आपको कि जो भी surface area है पाउडर का और उसके है ना उसका जो वॉल्यूम है, surface area of symmetric particle divided by volume, you will get a shape factor. For a sphere, for a circle, shape factor is nothing but the 6. So minimum possible value of shape factor is a 6 and particle is considered as a asymmetric if shape factor is more than 6. तो जो स्फीयर है आपका, ये जो स्फीयर होता है उसका शेप फैक्टर कितना होता है 6. शेप फैक्टर फॉर द स्फीयर इज 6 और यू कैन से शेप फैक्टर फॉर द यूनिफॉर्म पार्टिकल or spherical particle is nothing but the 6. But if particle is asymmetric in nature, it is a more than 6. Are you getting, are you getting or not? शेप फैक्टर समझ में आया आपको? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. शेप फैक्टर फॉर स्फीयर इट इज नथिंग बट द 6. शेप फैक्टर फॉर, है ना, शेप फैक्टर फॉर स्फीयर इट इज नथिंग बट द 6 and for asymmetric particle shape factor will be more than 6. रिमेंबर, ओके. स्फीयर का एरिया कितना होता है पाई डी स्क्वायर. स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है पाई डी 1/6 पाई डी रेज़ टू 3 पाई डी क्यूब, है ना. सो अगर आपने कंसीडर किया कि ए स्फीयर इज हैविंग surface area known as as into d, okay, d square और उसका वॉल्यूम अगर है कि आपने कंसीडर ए वॉल्यूम ए इतना होगा. and if you arrange this equation for a shape factor you will get a this shape factor is equal to surface area of particle divided by volume of particle. Now for a spherical particle it is a 6. 6 is the minimum possible value for shape factor, okay. and you can say sphere has a shape factor of 6. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Now if particle is having shape factor more than 6, the particle is considered as a asymmetric. अगर कोई पार्टिकल का शेप फैक्टर अगर 6 से ज़्यादा है उसको अपन बोलेंगे एसिमेट्रिक पार्टिकल और नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल. क्योंकि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म है तो उसका शेप फैक्टर आता है आपका 6, राइट. पार्टिकल नंबर, व्हाट डू मीन बाय पार्टिकल नंबर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज मीन बाय पार्टिकल नंबर, इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है. नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेट. सिंपल डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल per unit weight. It is denoted by capital N and it is given in terms of volume number, mean diameter, volume number, mean diameter. After derivation you will get a, after derivating the equation, if you want to see that you can see from the book, but that is not required for GPAT. But you should know what is meant by particle number. क्या आता है particle number? Number of particles per unit weight. जैसे for example आपने अगर एक 1 gram powder ले लिया and you have to measure the particles. How many particles are there in a 1 gram of powder? Say for example इसमें कुछ आता है 200 300, है ना, 200 300 500, 1000 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकता है. So that is nothing but the particle number. Number of particles per uniform or per unit weight known as a particle number. Okay. Now it is given in terms of either वॉल्यूम नंबर और मीन डायमीटर, है ना. तो पार्टिकल काउंट कैसे करते हैं? इधर उसका वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम या फिर उसका डायमीटर,
उसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं. Okay, and you will get lastly you will get one equation known as a particle number. So particle number n is equal to 6 divided by pi d, है ना, pi d s to t vn. Vn मतलब क्या है? Either it can be described, particle can be described either in the form, either in a volume number or by mean diameter. So that's why d vn into rho. Rho क्या है उसका? So density. So 6 divided by pi d cube Vn into rho. Now you can see the sphericity values of some shape. जैसे अगर पार्टिकल का शेप होता है टेट्राहेड्रॉन, so उसका स्फेरिकल वैल्यू होता है 0.671. क्यूबॉइडल अगर पार्टिकल है, if your particle is cube, so you will have this shape sphericity. An octahedron will have sphericity of 0.846. Cone will have sphericity of 0.724. Cylindrical particles will have 0.874, and sphere will have sphericity 1. Now this sphericity and shape factor is different. The sphericity of sphere is 1, shape factor of sphere is a 6. Am I audible to you? Are you getting? रिवाइज करना है इसको, इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन याद रखो, पार्टिकल नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, शेप फैक्टर ऑफ स्फीयर के ऊपर क्वेश्चन आता है. इफ शेप फैक्टर ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 6, सो पार्टिकल इज एसिमेट्रिक इन नेचर, सिमेट्रिक नहीं होता. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल? पार्टिकल कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय. पार्टिकल किसके ऊपर डिपेंड करेंगे आप? पार्टिकल कैन बी डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम और सरफेस एरिया. पार्टिकल का साइज कितना है? 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन. पार्टिकल का शेप कैसा है? सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, स्फेरिकल. वॉल्यूम कितना है? पार्टिकल का सरफेस एरिया कितना है? पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स. पार्टिकल्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय साइज, शेप, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. नाउ पार्टिकल, व्हाट इज मीन बाय पार्टिकल साइज? Particle size. Due to asymmetrical nature of most of the pharmaceutical particles, it can be expressed as a equivalent diameter of sphere. Now, मैंने जैसे बोला है कि pharmaceutical powders mostly they are the polydispersed, okay? And most of the powders of pharmaceuticals they have no uniform size. हर एक uniform size मतलब uniform shape मतलब क्या? Spherical, है ना? So most of the pharmaceutical powders will have asymmetric nature, well, and it can that's why it can be expressed as an equivalent diameter of sphere. Sphere को क्या बोलेंगे अपन? Ideal particle. So ideal particle should be like a sphere, should have a spherical shape, should have a uniform surface, should have the shape factor 6, should have sphericity 1. Okay, that is the ideal particle. Okay, but as I told you, most of the pharmaceutical particles they are asymmetric in nature. That's why it is not easy to characterize them. It is not easy to express them. So how to express them? They are expressed in comparison with the sphere. Sphere की comparison में express करते हैं. Okay? Sphere is a symmetrical particle. So they are expressed as an equivalent diameter of sphere. उसका size अगर करना है आपको, जैसे for example there are different diameters. Okay, first one is nothing but the surface diameter. First one is nothing but the surface diameter. What is surface diameter? जैसे मैंने बोला है कि आपका अगर irregular shape का particle है तो उसको अपन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसका साइज होगा, है ना. irregular shape का अगर particle है ऐसा कुछ, है ना, तो उसका शेप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते. अगर spherical particle है तो उसको easily एक्सप्रेस कर सकते हैं, right? So to express the irregular particle which are present in the most of the pharmaceutical powder, so they are expressed as an equivalent diameter of your sphere. तो sphere के comparison में equivalent diameter उनका consider किया जाता है, right? The first one is the surface diameter denoted by D in a subscript S. So surface diameter. Now what is the diameter of sphere or diameter of asymmetric particle? You know, diameter of sphere having same surface area as that of the asymmetric particle. अगर, है ना, asymmetric particle का surface area अगर है जितना, उतना ही अगर sphere का भी
तो उसको बोलेंगे सरफेस डायमीटर. एसिमेट्रिक पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस्ड, ओके, expressed as a surface diameter if asymmetric particle is having same surface area as that of the symmetric particle. सिमेट्रिक पार्टिकल का और एसिमेट्रिक पार्टिकल का अगर सरफेस एरिया दोनों का सेम है तो दैट इज सरफेस डायमीटर. ओके, तो बिकॉज एसिमेट्रिक पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सप्रेस, दैट्स व्हाई द surface area of asymmetric particle if it is equivalent to the surface area of symmetric particle, so that is the surface diameter. What do you mean by surface diameter? So diameter of sphere which is having same surface area as that of the asymmetric particle, है ना. So ऐसे ही आएगा आपको. So surface diameter is nothing but the diameter of is, okay, diameter of sphere having same surface area as that of the asymmetric particle. Next होता है volume diameter. So again यहाँ पे क्या है कि volume of sphere, okay, volume diameter क्या होगा? It is nothing but the diameter of sphere having same volume. A diameter of sphere having same volume as that of the asymmetric particle. Asymmetric particle मतलब sphere का और asymmetric particle का अगर volume same है तो उसको बोलेंगे volume diameter. It can be expressed as either surface diameter, so the diameter of sphere having same surface area as that of the asymmetric particle. Volume diameter, a diameter of sphere having same volume as that of the asymmetric particle. Now next one is the projected area diameter. Projected area diameter, dP. Okay. Now diameter of sphere having same area as that of the asymmetric particle when it is observed under microscope. तो याद रखना है, there is one of the method for measurement of particle size known as a microscopy. Now in the microscopy projected area diameter is measured. तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो बाद में भी आएगा वो. Okay. So now first we have seen the surface diameter, that is the diameter of a sphere having same surface area as that of the asymmetric particle. Volume diameter, a diameter of sphere having same volume as that of the asymmetric particle. Projected area diameter, diameter of sphere having same area as that of the asymmetric particle when observed under microscope. Next होता है आपका Stokes diameter. Stokes diameter. Now it is the diameter of sphere, okay, having same sedimentation rate. Okay, diameter of sphere having same sedimentation rate as that of the asymmetric particle. अगर आपने spherical particle डाल दिया solution में, है ना, और asymmetric particle डाल दिया, अगर वो दोनों ही sedimentation जो rate है, velocity per unit time, if velocity per unit time of getting settled for both sphere and asymmetric particle it is same, then that is Stokes diameter. Stokes diameter is the diameter of sphere having same sedimentation rate as that of the asymmetric particle. I hope are you getting? You are getting. समझते तुम्हाला? Next is nothing but the sieve diameter. Sieve diameter is nothing but the diameter of sphere as the, okay, diameter of sphere that passes through a same sieve number as that of the, or same sieve number or same mesh aperture as that of the asymmetric particle. मतलब कहने का मतलब क्या है कि sieve diameter किसको बोलेंगे? अगर asymmetric particle जो है वो सेम sieve नंबर से पास होता है, सेम मेश अपर्चर sieve से पास हो रहा है, कौन से? जिससे स्फीयर पास होता है. स्टोक डायमीटर मतलब क्या? जो रेट ऑफ सेटलिंग है किसका? एसिमेट्रिक पार्टिकल का. रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ एसिमेट्रिक पार्टिकल इन द solution or in the, that is sedimentation. The rate of settling of or rate of sedimentation of particle is same as that of the sphere known as a Stokes diameter. Stokes diameter. Projected area diameter मतलब क्या है? Diameter of asymmetric particle and sphere is having same area when observed under microscope. Surface diameter means what? Diameter, okay, diameter of asymmetric particle and sphere they are having same surface area. Volume diameter means what? Diameter of sphere and diameter of your asymmetric particle having same volume. That is the volume diameter. जो spherical particle होता है वो easy होता है describe करने के लिए, पर जो non uniform particle होता है और asymmetric particle होता है तो that is not easy to express. So that's why asymmetric particle is expressed in terms of spherical particle by comparing this or by expressing the diameter of asymmetric particle with that of the spherical particle.
जो एसिमेट्रिक पार्टिकल है उसका जो डायमीटर है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल डिस्क्राइब किया गया है। तो दैट्स व्हाई पार्टिकल सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर है ना, स्टोक्स डायमीटर एंड सीव डायमीटर, और एक एक दो भी होता है, जैसे फेरेट डायमीटर होता है एंड और भी होता है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम टू सरफेस एरिया डायमीटर, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया डायमीटर। व्हाट इज इट? डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सेम वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया रेशियो। इसमें क्या है? वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया रेशियो, वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया रेशियो। पहले में क्या था? पहले में था सरफेस एरिया। सरफेस डायमीटर में क्या है? सरफेस एरिया स्फीयर का और एसिमेट्रिक पार्टिकल का सरफेस एरिया सेम है, तो उसको सरफेस डायमीटर बोलेंगे। वॉल्यूम डायमीटर में स्फीयर और एसिमेट्रिक पार्टिकल का जो डायमीटर है उनका वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम डायमीटर। प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर में क्या है कि सरफेस एरिया ही है सेम, बट कहाँ कहाँ देखा है? ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। स्टोक डायमीटर मतलब क्या है? So both symmetric as well as asymmetric particle, if they are having similar sedimentation rate, same sedimentation rate, known as a Stokes diameter. C diameter मतलब क्या? If symmetrical particle and asymmetrical particle, they are having diameter which can pass through same sieve or same mesh aperture, known as asymmetric, known as the diameter, sieve diameter. Now volume surface area diameter, diameter of sphere having same volume to the surface area ratio as that of the asymmetric particle. Again there is one more diameter known as a ferrite diameter, है ना, तो उनका ferrite diameter भी अपन देखेंगे। There are different shapes of particle, shapes के अलग होते हैं। There are different shapes of particle. It may be either spherical, smooth, spherical, rough, spherical, irregular, rounded, angular, elongated, irregular, acicular, angular, dendritic, जैसे अपन ने देखा है लास्ट स्लाइड में। स्पेरिकल, स्पेरिकल स्मूथ पेरिकल, स्पेरिकल रफ सरफेस, स्पेरिकल इरेगुलर सरफेस, राउंडेड, एंगुलर, elongated, irregular, acicular, angular and dendritic. These are the different shape. So shape factor for sphere is a 6, shape factor for sphere is a 6, and shape factor for asymmetric particle is more than 6. You have to remember. Shape factor. What is the shape factor? It is nothing but the it is nothing but the ratio of surface area factor to the volume factor. Just take minute, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। Now shape factor is nothing but the ratio of surface area factor to the volume factor. What is shape factor? Surface area factor divided by volume factor. तो जो भी पार्टिकल है उसका जो सरफेस एरिया फैक्टर है इन कंपैरिजन विद द स्फीयर, और उसका वॉल्यूम फैक्टर है, अगर ये डिवाइड किया उसको बोलेंगे शेप फैक्टर। नाउ फॉर स्फीयर इट इज अ 6। फॉर स्फीयर अगर पार्टिकल अगर स्फीयरिकल है, यूनिफॉर्म इन द शेप है, तो उसका जो शेप फैक्टर आता है 6 आता है। नाउ इफ पार्टिकल इज एसिमेट्रिक, if particle is asymmetric, then shape factor is more than 6. It exceeds 6 for particle which is asymmetric. Remember, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब characteristics of powder, it can be characterized by powder. Powder can be characterized by powder size, particle number, then surface area, then volume, flow properties, and density. Right? Now, powder size. What is powder? Powder is nothing but the collection of simply particles. है ना, पाउडर में क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने मिट्टी का पत्थर ले लिया, फोड़ दिया उसको, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सो पाउडर इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, और इफ पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर आर यूनिफॉर्म इन द साइज, इट इज नोन एज अ मोनोसाइज पाउडर और मोनोडिस्पर्स पाउडर। पाउडर के पार्टिकल्स अगर साइज है सेम है, सो इफ दे आर यूनिफॉर्म इन द साइज, नोन एज अ मोनोसाइज और पॉली monocyte monodispersive powder. Now it is obtained by sieving from the desired mesh aperture. तो आपने अगर, है ना, जैसे मान लीजिए आपने अगर 250 नंबर का सीव ले लिया और आपके पास जो पाउडर है उसको उस सीव से पास किया, तो आपको जो बिलो द सीव जो आएगा, मतलब अंडर साइज पाउडर जो आएगा, so it is nothing but the monodisperse because you have passed through a particular sieve mesh aperture. You are getting a uniform particles over there. Right? That's why mono size powder means powder having same particle size. Okay.
that is obtained by sieving. Question आ सकता है, how to obtain a mono size powder, how to obtain a mono disperse powder. They will confuse you in these terms, mono size, mono disperse. दूसरा एक होता है mono size powders, they are used for the standardization of particle size. Mono size powder, they are used for the standardization of particle size. They are used for the standardization. They are used for the standardization of particle size analyzer. Mono size powders, they are used for the standardization of particle size analyzer. The accurate determination of pore size of the filter. They are also used in the accurate determination of pore size of the filter. They are effective in the immunization. Immunization matlab antigen. So adsorption of antigen on the particle. Mono size powder also used in the diagnosis. Most of the pharma powders or most of the powders in the pharmaceuticals, they are the polydisperse. Polydisperse matlab powders is not powder having non-uniform particle size. Polydisperse, non-uniform particle size. Now to describe such a, okay, so powder arithmetic mean, then geometric mean, harmonic mean are the they are used for characterizing the powder. In particle size distribution is number of, or particle size distribution number is nothing but the weight of particle lying within a particular range, in a certain range. Particle size distribution ना, मतलब क्या, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे आपके पास एक पाउडर है, तो आपको वो एक टॉप में होगा, बॉटम में होगा, एक मिडल में होगा. तो उसका सैंपल 1 ग्राम सैंपल ले लो, उसमें कितने पार्टिकल्स है और कितने साइज के पार्टिकल है, तो उसको लेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज नंबर और वेट ऑफ पार्टिकल लाइंग इन द पर्टिकुलर रेंज, है ना. जैसे मान ली 1 ग्राम पाउडर में अगर 10 माइक्रोन के पार्टिकल ज्यादा है ना, ज्यादा सबसे ज्यादा 10 माइक्रोन के पार्टिकल, बहुत ही कम 5 माइक्रोन के. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन 10 माइक्रोन. Particle size distribution is nothing but the weight of particle lying within a particular range or certain range. Now it can be described or expressed by either distribution curve data analysis like frequency distribution curve or cumulative frequency distribution curve or log distribution curve. If you want to read this, if you want to see this curve, I will show you in the next lecture also. In the next lecture I will explain same thing from book also. But for GPAT, what is important that I have extracted and that I am presenting. ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा कल आपको बुक में से. For that, what is important we will see. Particle size of pharmaceutical powder are strictly maintained to get a optimum biological activity, to get a uniform dosage. Particle size of pharmaceutical powder, they are strictly maintained in a particular range to get a optimum biological effect or particle uniformity of dosage. So for example, drug aspirin, उसका dosage form अपन बहुत सारे use करते हैं. Aspirin is formulated in the dispersible tablet. Now aspirin should have particle size in this range. Okay, CU number, okay, CU number 180. So aspirin formulation के लिए ये CU से पास करते हैं और उसका particle size use करते हैं. Okay. So particle size for the pharmaceutical, they are strictly maintained. Now hydrocortisone, so for example it is used for OW emulsion, so you need a particle size 90% particle should be less than 5 micron. 90% particle should be, okay, 90% particle should be in a range of 50 micrometer to 5 micrometer. Now for amorphous zinc insulin, so it is used for injection, particle size should be less than or equal to 2 micrometer. Crystalline zinc insulin, so particle size should be in the range of 10 to 40 micrometer. So examples, they will not ask you these examples, but you should know why it is required to maintain. Betamethasone tablet बनाते हैं उसका अपन, particle size should be maintained. 90% particle should be in a range of 5 to 50 micrometer. Particle size is very important to establish the uniformity of dosage of the pharmaceuticals. Now methods to determine the particle size. Then methods to determine there are different methods. For example, optical microscopy is there. Okay, then sedimentation method is there. Then sieving method is there. Then culture counter method is there. Okay. Then air permeability methods are there. These are the main important methods. Okay, so optical microscopy एक होता है जिसमें अपन माइक्रोस्कोप के नीचे वो पार्टिकल का
डायमीटर चेक करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर। बाद में सेडिमेंटेशन मेथड होता है जिसमें अपन स्टोक्स डायमीटर मेजर करते हैं। तीसरा एक होता है आपका तीसरा होता है आपका सरफेस एरिया मेजरमेंट। सरफेस एरिया कहाँ से मेजर करते हैं अपन? इट इज मेजर बाय एडसॉर्प्शन मेथड, कल्चर काउंटर मेथड, वॉल्यूम भी मेजर करते हैं ना, पार्टिकल वॉल्यूम मेजर, कल्चर काउंटर मेथड, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, देन सेडिमेंटेशन, देन air permeability method. These are the few methods for measurement of particle size. So out of that, first one is nothing but the optical microscope. तो आपको यह बुक में दिखाया है माइक्रोस्कोप कैसा होता है, वो तो आपको मालूम है ऑलरेडी। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग दैट पार्ट। सो आपको मालूम है माइक्रोस्कोप कैसा होता है, उसको आईपीस होता है, उसका मेजर है ना, मेजर एडजस्टिंग टू, माइनर एडजस्टिंग टू, फाइन एडजस्टिंग टू, कोर्स एडजस्टिंग नॉब, फाइन एडजस्टिंग नॉब, बाद में उसमें हाउसिंग कहाँ पे है ना, भाग आईपीस कहाँ पे, लेंस कहाँ पे, सब मालूम। Now in the optical microscopy projected area diameter is measured, ये important है। So क्वेश्चन आ चुका है। So which diameter of particle is measured in the optical microscopy? So remember, in the optical microscopy there is optical microscopy for measurement of particle size. So projected area diameter, that is measured. Projected area diameter is measured in the optical microscopy used for the particle size analysis. Now this optical microscopy is used for the particle size analysis in case of suspension. Okay. Then globule size in the emulsion, globule size in the emulsion, particle size in the aerosol, diameter only on two-dimensional is obtained. So that is a drawback of this optical microscope. तो इसके ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ है, बट मेन क्या है कि मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। सो वट एवर डायमीटर यू आर मेजरिंग है ना, वट एवर डायमीटर यू आर मेजरिंग है ना, उसका प्रोसेस भी देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 2% सॉल्यूशन ऑफ योर सस्पेंशन यू हैव टू प्रिपेयर एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप ग्रेजुएटेड है ना, ग्रेजुएटेड स्लाइड में कि इतने पर्टिकुलर एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं, लाइक वाइज दैट उसका प्रोसेस अपन कल देखेंगे पूरा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इन दैट प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर इज मेजर्ड एंड डायमीटर मेजर्ड इज ओनली इन अ टू डायमेंशनल, इट इज नॉट अ थ्री डायमेंशनल। diameter measured is only two dimensional and this process is slow and tedious. Large number of sample is required, large number of particles required to measure। इसका नंबर कितना होता है? large number of particles required to be measured, so around 300, around 3000 to 5000, 3k to 5k, 3000 to 5000 particles you have to measure per sample. That's why it is a tedious process. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आए। So large number of particles required to be measured, but how many? 3000 to 5000 particles you have to measure per sample, and that's why it is a tedious process. Okay. These are the disadvantages. What are the disadvantages? First disadvantage क्या है? The diameter from only two dimension that is measured, and large number of particle you have to measure. That is disadvantage. Diameter measured इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में कौन से डायमीटर मेजर करते हैं? कोई प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर दैट इज डायमीटर ऑफ स्फीयर और डायमीटर ऑफ सर्कल हैविंग सेम एरिया एज दैट ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्व टू द सरफेस ऑन व्हिच पार्टिकल रेस्ट। जो स्लाइड के ऊपर जो पार्टिकल का सरफेस एरिया है जो ऑब्जर्व हुआ है, अगर वो स्फेरिकल सर्कल और स्फीयर का अगर सेम है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर। प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ स्फीयर और सर्कल हैविंग सेम एरिया एज दैट ऑफ द ऑब्जर्व्ड पार्टिकल। ओके, देन नेक्स्ट आता है इसमें मार्टिन डायमीटर। सो डायमीटर व्हिच आर यूज्ड और व्हिच आर मेजर्ड अंडर द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। सो फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, सेकंड वन इज द मार्टिन डायमीटर। मार्टिन डायमीटर एंड थर्ड वन भी होता है फेरेट डायमीटर, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो तीन डायमीटर होते हैं ना, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, मार्टिन डायमीटर एंड फेरेट डायमीटर, these three diameter they are measured under the optical microscope. दूसरा है मार्टिन डायमीटर, the length of line that bisect the particle image
that can be drawn in any direction and must be drawn to the same direction for the other particle. ना मतलब क्या है, जैसे एक पार्टिकल है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना, यहाँ से लेके यहाँ तक, the length of line that bisect the particle in the image, it can be drawn in any direction, it must be drawn in the same direction for comparative particle. मतलब स्फीयर अगर है तो स्फीयर के लिए भी इसी डायरेक्शन में मेजर करना, स्फीयर भी है इसी डायरेक्शन में मेजर करना. So that is not okay. So length of that line that bisect the image of particle, if it is same for spherical particle also, the length of that line which bisects, so if it is same, known as a Martin diameter. Martin diameter. Now next one is a ferret diameter. Ferret diameter. So three kind of diameters they are measured in the optical microscopy. First one is a projected area diameter. That is the diameter of sphere having same surface area as that of the asymmetric particle which is observed under microscope. In Martin diameter, so the length of line, if the length of line which bisect the particle image and it is drawn in any direction, must be same for the spherical particle known as the Martin diameter. Ferret diameter, distance between two tangents on opposite side. Distance between two tangents on opposite side of the particle parallel to the fixed direction. ये अगर ये दोनों distance between two tangent on opposite side of particle parallel to the some fixed direction. So ये same है, same is there for sphere and same is there for asymmetric particle known as the ferret diameter. So remember question आता है इसके ऊपर, projected area diameter is measured under the optical microscopy around 3000 to 5000 particles you have to measure per sample. Then following type of diameters which are measured in the optical microscopy: projected area diameter, Martin diameter and ferret diameter. Right? There are three. Now same thing is explained over here. Martin diameter क्या होता है? Say projected area diameter. First जो था projected area diameter, diameter of sphere, ज्योतिक्राय sphere, diameter of sphere having same surface area as that of the asymmetric particle. Asymmetric particle उसके पीछे है, known as the projected area diameter. Now Martin diameter, the line that bisects the particle, line that bisect the particle, surface area, that surface area of that line bisect the particle, and same line is drawn for the symmetrical particle also. That is known as a Martin diameter. A ferret diameter, tangent drawn on the both side, tangent drawn on the both side for the asymmetric particle. That is nothing but the ferret diameter. That is nothing but the ferret diameter. So equivalent diameter of asymmetric particle which are measured in the optical microscopy. ये सब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर मेजर किए जाते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. सेकंड मेथड होता है आपका सीविंग मेथड. सो सीविंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड in the tablet and capsule. Now which diameter is measured here? Sieve diameter is estimated or measured. Sieve diameter. Now what is sieve diameter? The diameter of sphere having diameter of sphere having no, diameter of sphere which passes through a same sieve or same mesh aperture as that of the asymmetric particle known as a sieve diameter. Now this okay. Now advantage of sieve method is nothing but the disadvantage of sieve method. Disadvantage of sieve method is nothing but the lower limit. Lower limit होता है इसका 50 micron. So you cannot measure the particle size less than 50 micron by sieve method. That's why there is a disadvantage of sieve method. So sieves used to clog frequently. इसमें clogging भी होता है frequently. That is the another disadvantage. Now sedimentation method होता है sedimentation method. ये मेथड अपन डिटेल में बाद में देखेंगे सीविंग वगैरह. Sedimentation method is mostly used for the formulation and evaluation of suspension, emulsion, determination of molecular weight of polymer. Now in the sedimentation method, Stokes diameter is used. Stokes diameter, and suspension should be dilute 1 to 2% while measuring the particle size by sedimentation method. So जो भी सस्पेंशन है आपका वो डाइल्यूट होना चाहिए 1 to 2%.
and the flow should be laminar. जो flow जो है तो मतलब जो settling हो रहा है particle का, that should be laminar. Should be laminar. Now laminar means what? You know that we have seen the flow of fluid. Remember Reynolds number, if it is more than 0.2, if Reynolds number is more than 0.2, the flow is turbulent. So Reynolds number is less than, okay, less than 0.2, the flow is laminar, and if it is more than 0.2, turbulent. Okay, तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. Particle size determination by sedimentation method is applicable only if the Reynolds number is not more than 2. The question already आ चुका है GPAT में और GATE में. So sediment particle size measurement by sedimentation method is applicable when only Reynolds number is not exceeding. Method is applicable to predict the exact size if Reynolds number is not exceeding 0.2. So Stokes diameter is nothing but the diameter of sphere which is having same sedimentation rate as that of the asymmetric particle, known as the Stokes diameter. It can be given by the equation. इसका भी equation derivation दिया है वहाँ पे, but derivation is not. So it is nothing but the square root of 18 rho h divided by 18. Okay, ये rho s divided by rho p gt. Now what is this? Nu is nothing but the density of liquid. H is nothing but the height from which the height means the distance traveled. Right? Height is nothing but distance traveled. Then ps minus rho s minus rho 0 है कि density of particle and density of medium. Now what is g? G is nothing but the acceleration due to gravity. T is nothing but the time. So these are the things in a Stokes diameter. Okay? Now एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, Stokes law is applicable when particle size measurement is done by sieving method, है ना, optical microscopy, और दूसरा भी एक आता है जैसे culture counter method and sedimentation method. So Stokes law is applicable for sedimentation method. ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है. Now here h is nothing but the height of fall in time t. अगर no nu is the viscosity, n0 है viscosity medium. Rho s is density of particles, rho 0 is the density of dispersion medium, h is nothing but the acceleration due to gravity. H is the acceleration due to gravity. Now Stokes law is applicable when laminar flow is there, when Reynolds number does not exceed. Reynolds का equation होता है. फिर किसी एडवांस के ट्रेड पर लॉन्च कर लिया या फिर किसी Reynolds law R is equal to VD rho 0 divided by N0. Then एक दूसरा एक मेथड होता है under the sedimentation method only. There are 3-4 methods. Pipette method is there. 3-4 method is there. Tomorrow I will explain this method. But important is nothing but the Anderson pipette method. इसके ऊपर GPAT 2023 में भी क्वेश्चन आ चुका है. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. So Anderson pipette method is the method for measurement of particle size by sedimentation method. ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है. Anderson pipette method is the method of measurement of particle size by sedimentation method. याद रखना sedimentation method. Anderson pipette method. It is a pipette 550 ml cylindrical एक वेसल होता है, उसमें 10 ml का pipette होता है. So इसके ऊपर भी क्वेश्चन है. So in the Anderson pipette method 550 ml cylindrical vessel है, 10 ml का pipette होता है. Pipette. When pipette is placed in the cylinder, okay, containing solution of suspension, this lower tip should be 20 cm below from the surface of suspension. बाद में क्या करना है आपको, बाद में at a time interval you have to take a sample. जैसे for example 1 to 10 ml का एक sample ले लो, 10 to 20 ml का एक sample ले लो, ऐसा, जैसे 1 to 5 ml का एक ले लो, 5 to 15 का एक ले लो, 15 to 20 का एक ले लो. Then you have to dry that sample, and then you have to take a weight of sample, and then you can convert that weight into a particle diameter. That's how Anderson pipette method is there. But ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, Anderson pipette method for measurement of particle size is based upon the sedimentation. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. इसका
एंडरसन में 550 ml का सिलिंड्रिकल वेसल होता है और 10 ml पिपेट होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। Am I audible to you? Am I audible to you? Now next method is nothing but the conductivity method. Next method होता है conductivity method. Now it is also known as a stream counting method or stream scanning method. Stream scanning method or stream counting method. Particle volume is measured here. Particle volume measure क्या? Particle volume is measured and converted into particle diameter. Particle volume is measured and converted into particle diameter. Now size is expressed as a volume diameter and method is useful in the study of growth of particle in the suspension and solution. Dissolution of drug, effect of antimicrobial agent on the microbes. Okay. तो ये कंडक्टिविटी मेथड जो है मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज, इसमें क्या है पार्टिकल वॉल्यूम मेजर करते हैं। क्वेश्चन आता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर द पार्टिकल वॉल्यूम, पार्टिकल साइज, पार्टिकल सरफेस एरिया। पार्टिकल सरफेस एरिया का बाद में आएगा आपको ना। पार्टिकल साइज मेजर करने के लिए आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, यू हैव सेगमेंटेशन मेथड। पार्टिकल वॉल्यूम मेजर करने के लिए कंडक्टिविटी मेथड, इसमें वॉल्यूम मेजर करता है, लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल साइज। ये पार्टिकल साइज मेजरमेंट का मेथड है, पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट का मेथड है, राइट। हाउ सो इट इज नोन एज अ स्ट्रीम स्कैनिंग मेथड और स्ट्रीम काउंटिंग मेथड। इन दिस particle volume is measured, this particle volume is measured and converted into particle size, particle diameter. Size is expressed as a volume diameter and method is useful in the study of particle growth in the suspension, solution, dissolution of drug, then effect of antimicrobial agent on the growth of microorganisms. Now conductivity, as the name indicate conductivity, yes में क्या है कंडक्शन है, कंडक्शन मेजर किया जाएगा। पार्टिकल साइज मेजर कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि द particles to be measured, okay, the size, particle size measure of the particle, जो भी पार्टिकल साइज मेजर करना है आपको, जो भी पार्टिकल से सस्पेंशन जो भी है, so that is made, the powder is made into suspension with the help of sodium chloride, with the help of salt solution, and now there is a small orifice between this and at a orifice there is attachment of two electrodes, में दो इलेक्ट्रोड भी होता है ना, और उसमें सिंपली मतलब क्या प्रेशर से पार्टिकल्स उसमें मूव करना है, उसमें एक वेसल रहेगा, उसमें आपका सोडियम क्लोराइड रहेगा, उसमें से पार्टिकल पास होंगे, तो उसमें एक छोटा सा ओरिफिस भी होता है। नाउ व्हेनेवर देयर इज नो पार्टिकल, पार्टिकल नहीं है, सिंपली जा रहा है तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जा रहा है, वहां पे कंडक्शन है, इलेक्ट्रिक का करंट इज पास ना, कंडक्टेंस है ना। व्हेन ए स्मॉल पार्टिकल विल गो थ्रू दैट ओरिफिस, सो द कंडक्टेंस जो है ना वो डिक्रीज होगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नाउ दैट रेजिस्टेंस इज मेजर्ड, दैट इज एम्प्लीफाइड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। ओके, ऐसा ही बाद में आपको डिटेल में बोलूंगा ये मेथड, पहले इंपॉर्टेंट क्या है ये देख। कंडक्टिविटी मेथड इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम प्लस particle size. Now sodium chloride is used as a conducting medium which in which particles are suspended. Sodium chloride के solution में particles suspend किए जाते हैं। It measures the 4000 particles per second. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। The conductivity method, it measures the 4000 particles per second. That's why stream scanning method or stream counting method. Only disadvantage of this method is unsuitable for polar and highly water soluble material. Highly water soluble material में क्या होता है solvation effect मिलता है, that's why it is not suitable for highly polar and highly water soluble material due to solution. तो इसमें क्या है कि इसमें volume measure करते हैं, so in the conductive method particle volume is measured and then converted into particle diameter, right? Particle diameter. Now particle size is expressed as a volume diameter and method is used for the particle growth in suspension to monitor the particle growth in the suspension. Okay, then solution also, so resolution of drug and effect of antimicrobial drug on the growth of microbe. Now इसमें
इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ कंडक्टिंग मीडियम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। एंड 4000 पार्टिकल पर सेकंड दे आर मेजर्ड। डिसऑर्डरेज क्या है? इट इज अनस्टेबल फॉर पोलर एंड वाटर soluble मटेरियल ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। और डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर सरफेस एरिया, अपन ने पहले देखा डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर। सेकंडली वी हैव सीन मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम बाय कंडक्ट मेथड। पहला आपका था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, बाद में सेडिमेंटेशन मेथड, बाद में कंडक्टिव मेथड। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल और पाउडर सरफेस एरिया इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है दिस ईयर ऑल्सो, इस साल भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी आ चुका है। Particle surface area can be calculated by using particle size data which is obtained in the above methods। जो अभी पहले जो थे कहीं डाटा जो मिला आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, सेडिमेंटेशन में थे या फिर कंडक्टिव में, जो भी डाटा मिला है उससे भी आप पाउडर का सरफेस एरिया मेजर कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हो। बट स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ is nothing but the specific surface area of powder is nothing but the specific surface area of powder is nothing but the surface area per unit weight, है ना। specific surface area of powder is nothing but the, है ना, specific surface area of powder is nothing but the surface area divided by weight। मैं कॉल करता हूँ आपको, मैं लेक्चर में हूँ, ठीक है। ये इशू ऐसा है कि पढ़ना भी मैंने है, बच्चों के स्टाइपेंड के लिए स्ट्राइक भी मैंने ही करना है, पढ़ाई भी मैंने करना है, क्वालिफाई भी मैंने, मतलब आपका अधिकार है यार स्टाइपेंड लेना। आप रास्ते पे आ जाओ, आप स्ट्राइक करो, गाइड करने के लिए मैं हूँ, लेकिन हर बार मुझे ही पर दूसरे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इतने सारे क्लास से इतने सारे फीस लेते, किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी ने भी आवाज नहीं रेज किया। नो बडी हैज रेज्ड वॉइस फॉर योर स्टाइपेंड। बहुत सारे बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिला है, कुछ कुछ बच्चों को मिला है, कुछ बाकी बच्चों को नहीं मिला है, तो उनके लिए लड़ना पड़ेगा। तो जब मैंने स्ट्राइक प्लान किया यहाँ पे औरंगाबाद में, तो सेल्डमली एक 40-45 स्टूडेंट आए, और वो भी कहाँ से आए मैक्सिमम, वो भी धुले एरिया से आए, वो भी नासिक एरिया से आए, कुछ बाहर से आए, मतलब यहाँ के बच्चों को नहीं। अभी बच्चे बोल रहे सर आप पुणे में आ जाओ, पुणे में आ जाओ। तो जो स्टाइपेंड का इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग किसी को कोई लेना देना नहीं है, ना कॉलेज को, ना यूनिवर्सिटी वालों को, ना यूजीसी को, ना पीसीआई को, ना बाकी जो क्लासेस चल रहे हैं जिन्होंने 20,000 14,000 15,000 फीस लिया है, उनको तो कुछ लेना देना नहीं। आपको स्टाइपेंड मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, उनका चल रहा है ना काम, उनका तो चल रहा है बिजनेस, वो चल जान दो, वो अपना को लेना देना नहीं है। अपन अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करो। तो मैं मेरे एंड से जितना होगा बच्चों के लिए वो करता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर सरफेस एरिया, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल आएगा? Determination of powder surface area calculated by using particle size data. Also, what is obtained from, that is obtained from above method. But what is the specific surface area? The surface area of powder per unit weight. जो भी surface area है powder का per unit weight, मतलब surface area of surface area per unit weight. Surface area divided by 1 gram of powder. This is surface area per unit weight. Per unit weight or per unit volume. सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसको बोलेंगे? सरफेस एरिया पर यूनिट वेट और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, दैट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और दैट इज मेजर्ड इन द एडसॉर्प्शन मेथड। और फर्स्ट मेथड इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ पाउडर। मेथड कौन सा है? एडसॉर्प्शन मेथड। so in the adsorption method, so liquid nitrogen or nitrogen gas, liquid nitrogen is allowed to adsorb on the powder. Liquid nitrogen is allowed to adsorb on the powder and to form a monolayer. The lower temperature monolayer form बनता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो बाइलेयर और मल्टी लेयर फॉर्म होता है। एडसॉर्प्शन मेथड में लिक्विड नाइट्रोजन एट -190 डिग्री, liquid nitrogen at a -190 degree, that is allowed to pass over the powder। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, think 190 liquid nitrogen at a -190 degree, liquid nitrogen at a -190 degree, okay, that is allowed to pass over the powder, and once there is a monolayer, now you can calculate the surface area of that powder. How? one molecule of nitrogen one molecule of nitrogen is having 16 angstrom unit area। एक
जो मॉलिक्यूल है लिक्विड नाइट्रोजन का वो ऑक्यूपाई करेगा 16 एसओ में। तो हाउ मच liquid nitrogen is adsorbed on the powder that you can calculate, and that's how you can calculate the surface area of powder। तो याद रखना है adsorption मेथड में liquid nitrogen at minus 190 degree allowed to absorb on a powder to form a mono layer, and each nitrogen atom will each nitrogen molecule sorry will occupy the 16 enantiomer। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। There is a apparatus known as a, इसके लिए एक apparatus भी आता है उसको बोलते हैं quantasor। Automatic apparatus is known as a quantasor, known as a quantasor, QUANT quantasor। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। Which apparatus is used for the measurement of particle surface area by using adsorption method? So quantasor, QUAN quantasor याद रखना है। quantasor is the apparatus which is used to measure the particle surface area by adsorption method। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। नेक्स्ट है आपका एयर परमेबिलिटी मेथड। एयर परमेबिलिटी मेथड नेक्स्ट मेथड होता है एयर परमेबिलिटी। Now surface diameter is estimated by this method। It is a very simple method। Quick determination of surface diameter is there, used for the controlling batch to batch variation of the बेफेनियम हाइड्रोक्सिन एप्थोएट। एक ड्रग होता है बेफेनियम हाइड्रोक्सिन एप्थोएट, उसका बैच टू बैच वेरिएशन कंट्रोल करने के लिए एयर परमेबिलिटी मेथड यूज करते हैं, विच इज एंथैल्मेंटिक। ये जो है ना बेफेनियम हाइड्रोक्सिन एप्थोएट ये एंथैल्मेंटिक होता है, विच रिपेल्स द वर्म्स फ्रॉम जेट। ग्रिजोफोलिन के लिए भी यूज करते हैं, एंटीफंगल होता है। सो एयर परमेबिलिटी मेथड में क्या है, इसमें पाउडर रहता है। So in the powder particles you have space that is known as a capillary। Okay, that is known as a capillary। So air permeability means what? Air is passed through this powder. Air is passed through this powder, and it is measured over. Pressure differential is measured. So whatever pressure is there, introduction pressure and then pressure at this point, that is measured। यहाँ पे क्या है? Powder है। Powder के particle के बीच में क्या है? Capillary। Now air permeability method। Okay, the pressure differential is measured, and that is corresponding to the particle surface। That is corresponding to particle surface। Surface diameter is estimated by this method। It is simple method। Quick determination is there। It is used for the controlling the batch to batch variation of बेफेनियम हाइड्रोक्सिन एप्थोएट, which is anthelmintic, also used for the rhizophulvin। Kozny-Karaman equation is related with this। Kozny-Karaman equation is used to estimate the surface area by this air permeability method। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सो कौन सा इक्वेशन किसमें है? Kozny-Karaman equation is to do with the estimation of particle surface area by air permeability method। Kozny-Karaman equation याद रखना है। Kozny-Karaman equation is equation related to measurement of particle surface area by air permeability method। डिटेल में अपन मेथड देखेंगे, बुक में सब मैं बोलूंगा आपको, बट जीपैट के लिए इतना इंपॉर्टेंट। सो Kozny-Karaman equation is used to estimate the particle surface area by air permeability method। दोबारा बोल रहा हूँ, one official apparatus for the measurement of particle surface area by using air permeability method। इसके लिए एक ऑफिशियल है, उसको बोलते हैं फिशर सबस्यूसाइजर। Fisher substitutizer is an official instrument available for particle surface area by air permeability method। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि following method of particle size measurement 4000 particle per second they are counted। तो आपका ऑप्शन आएगा फिर वही सिविंग, वही फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, एयर परमेबिलिटी है ना, बाद में बीच में कंडक्टिविटी मेथड डाल देंगे। कंडक्टिविटी मेथड ठीक है। Kozny-Karaman equation is related with the measurement of particle surface area by following method। ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन में वही कंडक्टिविटी मेथड है ना, आपका सिविंग मेथड, आपका है ना सेडिमेंटेशन मेथड, और लास्ट में डालेंगे आपको एयर परमेबिलिटी मेथड। Kozny-Karaman equation is related to air permeability method। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। Kozny-Karaman equation भी यहाँ पे लिखा है। So I will not explain these terms। If you want to see, you can see in the books। Kozny-Karaman equation is equal to V मतलब क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू A डिवाइड बाय, ये तो आपने देखा होगा सबस्यूसेकर।
सो पार्टिकल साइज मेजरमेंट बाय स्विंग, ये तो अपने ऑलरेडी हो चुका है इसमें, किसमें, साइज सेपरेशन में. सो 10 number sieve will a particular. Now just remember, while it is a it is apparatus known as a sieve shaker machine. Now in these sieves are arranged in a descending order, है ना, मतलब क्या, जो बड़ा वाला sieve है वो टॉप पे रहेगा, sieve number 10, बाद में sieve number 20, 40, 60, 80, लास्ट में sieve number 120. मीन्स फाइनेस्ट sieve, इसमें क्या है कि सबसे फाइन पाउडर इससे पास होगा, ये कोर्स पाउडर इससे पास होगा. So in the sieve shaker machine, the sieve numbers are arranged in the descending order of their mesh aperture. Now, this is known as the Anderson pipette method. Anderson pipette क्या है, Anderson pipette apparatus क्या है, 550 ml cylindrical vessel, ये क्या है, 10 ml pipette, 10 ml. Anderson pipette method, measurement of particle measurement of particle size by sedimentation method, measurement of particle size by sedimentation method. This is Anderson pipette method. Now this is known as a Coulter counter apparatus, or measurement of particle volume as well as particle size. अब देखो यहाँ पे क्या है, so this one is known as a, यहाँ पे एक so whatever material you have to determine the particle size, that is suspended in the electrolyte solution with the material that is placed in this pipette. Okay, so this pipette is attached with the manometer to check the pressure differential. Now whenever particle, इसमें एक इलेक्ट्रोड भी होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पे नेगेटिव है. Now this is a orifice, small orifice. Now when solution will pass through this orifice, so there is a conductance, यहाँ पे electricity supply किया जाता है, current. Now sodium chloride is a good conductor of electricity, right? So when sodium chloride will pass through this, there is a conductance across this two electrodes, which is monitored. Okay, but when a particle of powder will come, when particle will pass through this orifice, so there is no conductance, means there is a resistance which is noted over here, and that resistance or threshold resistance is converted into this pulse height proportional to the particle volume, pulse height which is proportional to the particle volume. Okay. This is a Coulter counter apparatus. Now derived properties of powder, particle size and diameter, they are known as the fundamental properties, whereas the volume, density, porosity, they are known as the derived properties of. Influence of these properties of powder, like porosity is very important for dissolution of drug. ज़्यादा अगर porous है तो वो ज़्यादा dissolution लेगा. Bulk density, they are very important for selecting a container for the formulation. अगर उसका bulk density ज़्यादा है मतलब उसका वजन ज़्यादा है, कंटेनर अगर आपने हल्का कंटेनर यूज करेंगे तो यूजलेस है. Bulk density is useful for the content selection of container for formulation. Okay, flow properties यहाँ पे low है. Flow properties is important for establishment of uniformity of dosage. Now what is density? Density मतलब क्या होता है? Density is nothing but the weight of powder divided by volume of powder. Okay? Mass divided by volume है ना? Mass divided. Density is nothing but the mass divided by volume. Or true density is nothing but the mass divided by true volume. True volume, not there are different volume, bulk volume and true volume. ठीक है, अगर आपने आप डेंसिटी कैसे मेजर करते हो, आपने 1 ग्राम पाउडर लेना है, 1 ग्राम पाउडर लेना है, किसमें डालना है, मेजरिंग सिलेंडर में डालना है. यू हैव टू चेक द वॉल्यूम, हाइट, वॉल्यूम चेक करना है आपको. सो मास अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट द डेंसिटी. whatever density is there, it is known as a bulk density. It is known as a bulk density because you have taken a bulk mass and bulk volume. If the powder is having asymmetric particles, in between that there is a space known as a voids. इसको बोलते हैं अपना void volume. There is a void volume. Okay, there is space. If particles are irregular, particle अगर रेगुलर नहीं है, spherical नहीं है, तो उसमें वॉल्यूम रहता है, voids रहते हैं, उसमें स्पेसेस रहते हैं, कैपिलरी, known as a void. Okay, now what is true volume? True volume is equal to bulk volume minus void volume. True volume क्या होता है? Bulk volume minus void volume. Void volume कैसे minus करेंगे? So you have to tap. If you tap the cylinder 3 times, known as the 3 taps, and some methods are also there in which the cylinder is tapped up 500 times, 500 taps.
So you will get a true density, weight of powder divided by true volume. Okay, because volume may be either true volume, bulk volume, okay, or wide volume. True density is determined by helium or nitrogen displacement method. Psychometer साइकोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी. डेंसिटी मेजर करने के लिए क्या है, कौन सा apparatus is साइकोमीटर. योर टर्न. नाउ ओके, ट्रू डेंसिटी इज मेजर्ड बाय हीलियम और नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. व्हाट इज द मेथड, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू मेजर द ट्रू डेंसिटी. ट्रू डेंसिटी इज मेजर्ड बाय हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड और नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड और लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड. लिक्विड डिस्प्लेसमेंट के लिए वाटर एंड ग्लिसरीन, वाटर और इथेनॉल यूज करते हैं. वाटर और इथेनॉल लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड. और गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, गैस कौन सा है, हीलियम गैस यूज करते हैं या नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं. डिटरमाइंड बाय हीलियम और नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड और लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड. दैट इज अ ट्रू डेंसिटी. नाउ ग्रेनुलर डेंसिटी. ग्रेनुलर डेंसिटी मतलब क्या है, ग्रेनुल इज यूज्ड फॉर द टेबलेटिंग. टेबलेटिंग के लिए पाउडर का ग्रेनुल बनाते हैं, बाद में टेबलेट बनाते हैं. सो ग्रेनुल डेंसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ ग्रेनुल डिवाइड बाय सॉरी मास ऑफ ग्रेनुल डिवाइड बाय वॉल्यूम. नाउ दैट इज ग्रेनुल डेंसिटी. सो ग्रेनुल वेट डिवाइड बाय ग्रेनुल वॉल्यूम, दैट इज अ ग्रेनुल डेंसिटी. ग्रेनुल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. ग्रेनुल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय mercury displacement method. Granule density is measured by mercury displacement method. Now bulk density. Bulk density means what? Bulk mass. Bulk density means simply mass of powder divided by bulk volume. Mass of powder divided by bulk volume. That is a bulk density. There are okay. जिसका bulk density ज़्यादा है उसको बोलते हैं अपन heavy powder. जिसका bulk density कम है उसको बोलते हैं अपन light powder. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. The term light powder indicate the low bulk density. Term heavy powder indicate the high bulk density. So low bulk density means what? अगर किसी पाउडर का bulk density low है मतलब वो पाउडर क्या है ना, वो पाउडर क्या है, लो bulk density कम है मतलब वो पाउडर क्या है, लाइट पाउडर है, लाइट इन वेट. अगर किसी का bulk density ज्यादा है किसी पाउडर का तो उसका मतलब बताया वो हेवी पाउडर. Now low bulk density means what? High low bulk density means high bulk volume and therefore low bulk density. bulk volume ज्यादा है उसका, है ना. 1 ग्राम अगर ग्रेनुल्स लेंगे आप और मेजरिंग सिलेंडर में लेंगे तो उसका हाइट मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है. तो 1 ग्राम आप टाल्कम पाउडर ले लो और सिलेंडर में डाल दो, मेजरिंग सिलेंडर में, तो उसका हाइट आएगा आपको मैक्सिमम 4 और 5 सेंटीमीटर. तो वेट तो एक ही है लेकिन टाल का अगर हाइट 4-5 सेंटीमीटर आता है और ग्रेनुल्स का हाइट 6 सेंटीमीटर आता है. मतलब क्या, ग्रेनुल का जो ग्रेनुल्स है उसके बीच में जो स्पेस है उसमें बहुत सारा स्पेस बचा है, ये वो इरेगुलर शेप है. दैट्स व्हाई so high bulk volume is there in case of light powder. So in case of low bulk density powder is light, there is a high bulk volume. ये टर्म्स में आपको कंफ्यूज करेंगे. So high bulk volume, that's why low bulk density. Heavy powder means high bulk density and low bulk volume. Are you getting or not? समझ रहा है आपको? क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं. The term light powder indicate the low bulk density. Term heavy powder indicate the high bulk density. Bulk density is used to check the uniformity and quality of chemicals. Then it is very important for selection of empty capsule. empty capsule select करना है आपको कोई फॉर्मुलेशन के लिए, आपको उसको bulk density मालूम है तो उसको bulk density बहुत ज़्यादा है और आपका जो कैप्सूल है वो बहुत थिन है, कैप्सूल टूट सकता है आपको. lower the bulk volume, lower the bulk volume, higher will be the bulk density. Lower the bulk volume, higher the bulk density and bigger size of capsule is required. Lower the bulk volume, यहाँ पे higher है. Lower the bulk volume, higher will be the bulk density and bigger will be the capsule required. Now what do you mean by porosity? Porosity is also known as voids. Void volume divided by bulk volume. Porosity is equal to ठीक है, void volume divided by bulk volume. Void volume क्या होता है? Bulk volume minus true volume. Porosity is equal to void volume divided by bulk volume. But void volume क्या होता है? Bulk volume minus true volume. जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, आपके पास सिलेंडर है, आपने पाउडर डाल दिया. इनिशियली उसका हाइट आ गया
मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो उसको बोलेंगे अपन बल्क वॉल्यूम, उसको बोलेंगे बल्क वॉल्यूम। उसको अपने टैप किया है ना 500 टाइम्स, तो ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा आपका 3.2, 3.2 ऑन एन एवरेज। जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हो गए। अब जो ये वॉल्यूम है उसको बोलेंगे अपन ट्रू वॉल्यूम। पोरोसिटी इज नथिंग बट द बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम। ट्रू वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ, वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ। देन ग्रेन्युल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पाउडर itself plus intra particular spaces volume, that is the volume of pores and crevices, that is known as the pores and crevices। तो जो ग्रेनुल्स होते हैं उनके बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, उसको अपन बोलेंगे स्पेसेस और क्रिवाइसिस और पोर्स। ग्रेनुल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ प्लस वाइड वॉल्यूम। और बल्क वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पाउडर इटसेल्फ plus volume of intraparticular species plus volume of interparticular species is a void। True volume क्या होता है? True volume is nothing but the bulk volume minus void volume, that is a true volume। Bulk volume minus void volume। So flow properties, in the proper flow properties, it affects the flow properties, because if there is a frictional forces, flow properties of powder is affected by interparticular friction, shape of particles, flow properties। Improper improper flow is due to frictional forces between the particle। Proper flow is due to frictional particles in the frictional forces in the particle। How you can measure the flow properties? You can measure the flow properties by angle of repose, you can measure the flow property by Carr's index, Osn's ratio। What is the angle of repose? It is a maximum angle between the surface of pile of the powder and horizontal plane or diameter। प्लेन और डायमीटर। आप क्या करते हो? आपने किया होगा, कुछ पाउडर लिया होगा, ग्रैनुल्स लिए होंगे, पनेल में डाले होंगे, इसने ना पेपर रखा होगा आपने, उसके ऊपर ये पूरे ग्रैनुल्स आ चुके हैं, यहाँ पे बनाए पाई। और आपने क्या किया? जो पाई है उसको सर्कल कर लिया, उसको डायमीटर मेजर किया, फिर उसका हाइट मेजर किया। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r। व्हाट इज h? h जो है दैट इज हाइट ऑफ पाइल, r is nothing but the radius of pipe। So you might have done this practical। It is one of the indicator for flow properties। H is the height of pile, r is radius of pile, theta is the angle of decrease in the particle size। Decrease in the particle size leads to higher angle of repose। और इसके ऊपर GPAT 2023 में क्वेश्चन सेम लाइन। Decrease in the particle size, what is the effect of decrease in the particle size on the angle of repose? Option A, angle of repose is increased, angle of repose is decreased, it's option B। Decrease in the particle size leads to higher angle of repose। So angle of repose increase होगा, decrease जैसे particle size decrease होगा, angle of repose increase होगा। Lubricants at a low concentration decreases the angle of repose, but at higher concentration increases the angle of lubricant at low concentration। अगर low concentration में lubricant यूज करेंगे, that will decrease the angle of repose and increases the angle of repose at a higher concentration। फाइन्स, जो फाइन पार्ट होता है, फाइन्स 100 सी नंबर इंक्रीजेस द एंगल ऑफ रिपोज। ये जो तीन लाइन है, ये तीन लाइन के ऊपर, पहली लाइन के ऊपर क्वेश्चन आया GPAT 2023। और कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स, आल्सो नोन एज कार्स इंडेक्स और कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। कार्स इंडेक्स क्या होता है? इट इज अनदर मेजर फॉर फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। कार्स इंडेक्स इज इक्वल टू टैप डेंसिटी माइनस पोर डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी इनटू 100। So we have seen already what do you mean by micromeritics। Particle diameter is expressed as a spherical diameter, which is nothing but the size of particle of, okay, size of particle to the diameter of sphere having same surface area, volume or diameter। Also expressed as a stroke diameter, देखा है आपने। Also expressed as a projector area diameter, वो भी देखा है। Emulsion and fine emulsion, उनका particle size कितना था? On an average, particle size of suspension and emulsion 0.5 to 10 micron। Okay, coarse emulsion, calculated suspension upper limit of subsieve range 10 to 50 micron, lower limit for subsieve range is a fine powder range 50 to 100 micron। coarse powder range होता है 150 to 1000 micron। average granule size होता है 1000 to 3.360 thousand। sieve size भी दिया है उन्होंने। और remaining part will take tomorrow। remaining part